बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू रेंटलेस फॉरेक्स चैनल। तो गाइस, अगर आप कोई ऐसा चैनल ढूंढ रहे हैं जो आपको फ्री लाइव सिग्नल्स गोल्ड के, डाउ जोन्स के, नैस्डैक के और फॉरेक्स के बताए और आपको ये बताए रोजमर्रा की बेसिस पे जो फंडामेंटल डाटा मार्केट में आता है वो किस तरीके से मार्केट को इम्पैक्ट करता है, तो दिस इज गोइंग टू बी अ बेस्ट चैनल फॉर यू। इस वीडियो का एक इंग्लिश वर्जन भी है। इफ यू वांट टू हैव अ लुक एट दिस वीडियो इन इंग्लिश, यू कैन हैव अ गो एट अ डिस्क्रिप्शन लिंक ऑफ दिस वीडियो वेयर आई हैव अपलोडेड अ इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस वीडियो। तो गाइस, आज है 15 अगस्त 2023 और आज जो दो डाटा एक्सपेक्टेड हैं वो हैं आपके रिटेल सेल्स और रिटेल कोर सेल्स के। अच्छा, रिटेल सेल्स के जो बेसिकली एक्सपेक्टेड नंबर्स हैं वो हैं 0.4% और जो प्रीवियस एंट्री थी वो थी 0.2%। तो यहाँ पे अगर कोई चीज़ 0.4% से ऊपर आ जाती है तो ऑब्वियसली बात है, जैसे मैं पहले भी अपनी वीकली वीडियोस में बता चुका हूँ कि ये एक बुलिशनेस साइन जो है वो यूएसडी पेयर्स के लिए जो है क्रिएट कर देगा और ऑन दी अदर हैंड गोल्ड आपको थोड़ा नीचे की तरफ जाता हुआ दिखेगा। अब आप कहाँ से बाय और सेल कर सकते हैं ये तो भी जब हम टेक्निकल साइड पे जाएंगे इस वीडियो की तो देख लेंगे। उसके साथ साथ अगर आप कोर रिटेल सेल्स की बात करें तो यहाँ पे भी 0.3% जो है वो बेसिकली फोरकास्टेड नंबर है और 0.2%। तो अगर इससे कोई ऊपर चीज़ आएगी तो फिर यहाँ पे भी एक बुलिशनेस जो है वो क्रिएट हो सकती है आपके यूएसडी पेयर्स के लिए और जाहिर सी बात है जो बेरिशनेस है वो क्रिएट हो जाएगी गोल्ड पेयर्स के लिए। तो ये दो डाटा हैं जो कि एक्सपेक्टेड है। अच्छा, एक चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि जो है वो कल हमने जो है वो जिसके बारे में बात करी थी, यूएसडी जेपीवाई और जेबीपी जेपीवाई। काफ़ी सारे लोग इसमें फंसे में, मैंने स्टॉप लॉस दे दिया था। जब भी मैं स्टॉप लॉस देता हूँ क्योंकि मुझे पता होता है मार्केट जो है वो एबनॉर्मली भी बाजू का रिएक्ट करती है और अगेंस्ट द सेंटिमेंट चली आती है। अच्छा, अगर आप यूएसडी जेपीवाई का हाई देखें तो नवंबर 2022 से लेके अभी तक का जो टाइम था उधर तक ये इतना ऊपर नहीं गया था जितना ऊपर अब ये चला गया है। तो जाहिर सी बात है एक चीज़ इस तरह की हुई है जो कि एक्सपेक्टेड नहीं थी। अब इन दिस सेंस ऑब्वियसली क्योंकि उन्होंने जो उनके बॉन्ड यील्ड्स थे उसके बारे में जो है वो कोई इस तरह की जो है चीज़ बोली थी, अगर आप रिसर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, जिससे जो है एक 28 जुलाई के बाद जो है एक बुलिशनेस जो है आप देखें तो दूसरे जितने भी पेयर्स थे उन्होंने जेपीवाई के अगेंस्ट क्रिएट करी। अब जाहिर सी बात है जो बैंक ऑफ जापान की जो बेसिकली इंटरवीनिंग बेसिकली पॉसिबिलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ गई हैं। जाहिर सी बात है जब तक वो इंटरवीन नहीं करेंगे, अब ऑब्वियस सी बात है जेपीवाई का थोड़ा सा जो है ना वो दूसरी करेंसीज के अगेंस्ट मजबूत होना थोड़ा सा मुश्किल है। तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो इट्स वेरी बुलिश। अगर आप देखें तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अभी हम देख सकते हैं कल के स्टॉप लॉस यूएसडी जेपीवाई और जेपीबी जेपीवाई दोनों के जो है वो हिट हो गए थे। तो अब जो है वो जाहिर सी बात है अगर फर्दर पॉसिबिलिटीज़ ये हैं कि ये मजीद ऊपर की तरफ जाएगा जब तक बैंक ऑफ जापान जो है वो आके बीच में कुछ जो है बातें जो है वो जाहिर सी बात है जापानीज येन के बारे में नहीं करता। तो ये एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि बेसिकली जो है ये जो है इतना ज़्यादा जो है वो हाई चला गया एकदम से, $2-3 जो है एकदम से ये ऊपर गया है अगर आप देखें एक हफ्ते में। तो ये एक थोड़ी सी अजीब सी चीज़ इसमें क्रिएट हो गई है। अच्छा, अब अगर बात करें इन दोनों डाटा की तो इन दोनों डाटा का मैं पहले भी वीकली वीडियो में बता चुका हूं कि भाई अगर कोई भी चीज़ कंसेंसस से ज़्यादा आ जाएगी तो वो फिर बुलिशनेस क्रिएट कर देगी थोड़ी बहुत यूएसडी के लिए और बेरिशनेस क्रिएट कर देगी गोल्ड के लिए। उसके साथ साथ अगर कम आ जाती है तो फिर जाहिर सी बात है जो आपका गोल्ड है वो ऊपर की तरफ जाएगा और फिर बाकी का जो आपका जो यूएसडी है वो नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें जो है ना आज होने लगी हैं। अच्छा, बैंक ऑफ जापान का आज जीडीपी का डाटा था, मैं आपको बताता चलूँ, जिससे जो है एक्सपेक्टेड ये था कि जापानीज येन थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएगा, लेकिन क्योंकि ये इंटरवीनिंग ऑफ बैंक ऑफ जापान की न्यूज़ बार बार जो है वो जा रही है और मैंने आपसे बोला था कि अगेंस्ट द सेंटिमेंट जो है वो बेसिकली जो है वो रोल प्ले करता है मार्केट। तो यहाँ पे भी यही चीज़ है कि जीडीपी का डाटा तो बहुत ज़्यादा फेवर में आया जेपीवाई के, लेकिन उसके बावजूद एक बेरिशनेस क्रिएट नहीं कर सका जो है वो दूसरे पेयर्स अगेंस्ट द जेपीवाई। तो ये एक थोड़ा सा ज़रा कंसर्निंग पॉइंट है। तो इसका मतलब ये है कि बेसिकली द जेपीवाई इज़ वेटिंग फॉर द इंटरवेंशन ऑफ द बैंक ऑफ जापान। तो ये सारी चीज़ें आज देखनी है। अब चलते हैं टेक्निकल साइड की तरफ और देखते हैं कहाँ से बाय और सेल आप गोल्ड को, डाउ जोन्स को, नैस्डैक को कर सकते हैं और ऑयल को भी कर सकते हैं। चलते हैं स्क्रीन की तरफ। थैंक यू guys. First of all, now let's have a look at the oil, from which points you can buy or sell it. So guys, if you want to go for a buy of oil, the 79 and 78 area is going to be a safe area to go for a buy. The selling area will be from 84 till 84.80. So these are the buying and selling areas of the oil. There is nothing to talk about in oil right now. If you will find the oil in these places, you can go for a buy and sell. If you will not find oil on these places, don't indulge in between the points, and obviously if you are going to do it, then in this case obviously you may suffer losses in oil. So if you will find the oil in these places which I have mentioned here, then only in this case you have to get into the oil, otherwise not. Now moving on to the US 30.
So US30 yesterday call was successful. A lot of people went for a buy of US30 and they made 200 to 300 pips. Now today, the buying opportunity for the Dow Jones will be from 35,000 till 34,900 and the stop loss will be 34,800. So if you will find the Dow Jones on these places, you can go for a buy of Dow Jones. So things are little bit tricky for the US30 because it shows a bearish sign little bit. However, if you are going to find the Dow Jones in these points which I have mentioned in this video, then in this case you can go for a buy and a stop loss will be 34,800 for US30. But don't forget, we have today retail sales numbers as well. Now moving on to the Nasdaq. So yesterday I have given you a call to buy a Nasdaq from 14,950 till 14,900. A lot of people went for a buy of Nasdaq, and here you can see now they have made around 100 to 150 pips. Now today the things are going to be a little bit trickier for the Nasdaq. It is going to be buy from 14,960 till 14,900 and a stop loss is going to be the same like the yesterday, which is 14,850. The sell of the Nasdaq will be from 15,400 till 15,500. If you will find the Nasdaq on these areas, obviously you can go for a buy and sell, and the stop loss will be around 80 to 100 pips on buy and sell as well. Now moving on to the gold. Now here you have to look out for the points from 1902 till 1892. So these are the buying opportunities for the gold. So let's say if the retail sales number comes above 0.4%, then in this case obviously you will find the gold at 1892, and that is going to be a best place to go for a buy of gold. So if you will find it at 1892, this is going to be a best opportunity for you, and you can buy it till 1988. On the other hand, if the retail sales came number in the favor of gold, then in this case obviously the selling point will be from 1926 till 1932. So you can expect the gold to go up to 1932, and on that point obviously you can go for a sell of gold. So yesterday call of gold was also successful. We have went for a buy of gold from 1902, and a lot of people have made 80 to 100 pips. Now let's talk about the USD JPY. So guys, now this is a script which have created a lot of problem for all of you, obviously, because the things are not getting in the favor of the JPY. It is getting weaker against each and every currency, and a lot of bullishness have been created for the USD JPY pairs, and you can expect it to go further up if the Bank of Japan is not going to intervene in between, and obviously they will decide about the yields talk that they have did on 28th of July. So Bank of Japan have to intervene if you want the JPY currency to get stronger against each and every pair like USD JPY and JPY JPY. It have a further potential to go up from for 146 till 148. So you can expect it to go up to 148. So keep this thing in mind, and you can also hedge it on these points. For example, you can go for a hedge of USD JPY from 145.5, and then obviously when you are going to have it on 146.50, then you can realize your profit. Make sure if you are hedging, go for a buy of USD JPY with more lots. So you have to go for more lots. Whatever lots you have taken for the sell, make it double on the buy, and then obviously you can take a profit, and obviously you have to book some of the losses because obviously the things are not in the favor of the USD JPY in this case, obviously because the retail sales are also on the corner, and obviously if the retail sales number come in the favor of the USD, then in this case you will find it more bullish. So make sure that you are on a buy of USD JPY. Thank you very much. Gold Technical Forex is signing off.